Good evening to all of you. So, in today's class, we have to discuss the next chapter, that is Cold War. Cold War and Decolonization. Cold War and Decolonization. Clear? This chapter we have to discuss. In last class, we have already discussed about Chinese Revolution, right? Socialism, Russian Revolution. Between the period of two world wars, there were some ideological conflicts. This also we have discussed. Okay. So now we have to discuss the Cold War. And Cold War is an important development after Second World War. Okay, so we all know that in 1917, a Russian Revolution took place. This was the first socialist revolution in the world. Okay, and prior to that, there were liberal democratic countries, capitalistic countries. Okay, and that were dominating. Okay, so with industrial revolution, we can also say that before industrial revolution, from 15th century onwards, from 15th century onwards, capitalism, okay, as an idea, as an economic system was in existence. But this idea becomes more prominent with the industrial revolution, okay, in the mid of 18th century. ठीक है ना? This idea will become more popular, and this will support the idea of what? Liberal democracy. So these two ideas, liberal democracies and capitalism, both of them are associated with each other. Now here we see a different system, different economic system, different ideology, that is socialism. So obviously the two models are completely different. So from 1917 onwards itself, we see a kind of conflict between these two ideologies. ये conflict 1917 के बाद ही दिखता है, right? From 1917 onwards, we see the conflict between these two ideologies. We see the conflict between these two ideologies. But we have already discussed that the period between two world wars was also important or significant due to ideological conflicts. This all we know. Okay. So the first world war period was 1914 to 1918, and the second world war period was from 1939 to 1945. And I've already discussed with you that one of the most significant development during this period was one of the most significant development during this period was ideological conflict. We already have discussed it. Ideological conflicts. And in these ideological conflict, we see, okay, on one side there was capitalism, on other side there was socialism, and there is a third, you can say, that pillar also in this ideological conflict, and that is totalitarian ideologies like Nazism and fascism. We already have discussed it. So obviously capitalism, okay, is in opposition to the idea of socialism. Fascism, Nazism, they are also anti-communist ideas. Anti-communism, that is an important feature. Capitalism may be an important feature is what? Anti-communism. Got it? ठीक है? Socialism का important feature क्या है? Anti-capitalism. Anti-capitalism. But we see that during these two world war period, Italy and Germany both became very much powerful. Italy under the leadership of Mussolini and Germany under the leadership of Hitler, they became very much powerful. Okay, they challenged the authority of both, right? Socialist country, because the ideas were anti-communist. They also challenged the authorities of the capitalist nations. दोनों की ही authority को challenge किया.
Now some situations that I have already discussed with you, war equations, and what happened according to these war equations. I have already discussed with you in the classes, so I am not repeating that. In Second World War, okay, now again there are two group of nations, Group 1 and Group 2. Okay, so Group 1 allied powers were Britain plus France plus Russia, and they were supported by US. किसने support किया? US. But here there is an interesting thing. What we see here, that Britain, France, and US, these are the countries which are what? Liberal democracies. They are capitalistic forces, and they are fighting with the support of Russia. That is the socialist power. It means that during this World War II, both these two group of nations, इन्होंने क्या किया? Socialist and capitalist. They just diluted their ideological difference and fought together. यहाँ पे क्या किया? They diluted their ideological differences. They diluted their ideological differences. और डाइल्यूट करना भी पड़ता, बिकॉज आप किससे लड़ रहे थे? जर्मनी से लड़ रहे थे. यू आर फाइटिंग विथ जर्मनी, so that they diluted their ideological differences. Now what will happen? On the other side, Germany and Italy were fighting along with Japan, right? And we all know that in Second World War, which group emerged as victorious? Okay, so the answer is this group, Allied power. They emerged as victorious. They emerged as victorious. And after the victory, we see that those who are fighting here together, their ideological differences again come on the surface. यहाँ पे वो ideological difference कहीं ना कहीं dilute है. But after, okay, Second World War, after the conclusion of Second World War, the ideological differences came to surface. And what about Hitler and Mussolini, Italy and Germany? They were destroyed, they were defeated. What about Japan? Japan was also defeated. It means that in Second World War, after the conclusion of Second World War, after the conclusion of Second World War, what we see is that Britain, France, Russia, with the support of US, they were the victorious powers. But as soon as the war will end, their ideological differences come at the surface. It means these three countries are representing which ideology? Capitalistic ideology. And this country is representing which model? Socialist model. Clear? So, this is what ideological difference. Ideological difference will appear on the surface. Okay. And this ideological difference will turn into a conflict. And that conflict is not direct conflict. That conflict is what? Indirect conflict. Got it? Direct wars were not fought, proxy wars were fought. Okay, the battle was, you can say that, more like a diplomatic battle. Okay, battle that is not directly fought on the grounds, but many proxy wars were fought. So we see that after Second World War, right, the ideological difference appeared on the surface, and right, uh, indirect conflict, right, this indirect conflict was seen, indirect conflict was seen between two group of nations. Indirect conflict was seen between two group of nations, right? Group 1 under the leadership of US, and group 2 was led by USSR. Clear? So there are two group of nations. There are satellite states with Russia, and along with these satellite states, the group is known as USSR, and this is the group of capitalistic countries. So we see a conflict, and that conflict was indirect conflict. Direct conflict never took place. It was indirect conflict, right? And indirect conflict में क्या होगा? Direct war नहीं होगा, proxy war होगा. I will also discuss the meaning of proxy war. So here, proxy wars were fought. Proxy wars or surrogate wars were fought. Proxy wars or surrogate wars were fought. Okay.
and this situation was maintained till this year, till 1999. ये 1945 से लेके कब तक चलता रहा? 1919 तक, एंड दिस इज नोन एज कोल्ड वॉर. इसी को हम क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर. सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज कोल्ड वॉर, सो व्हाट यू विल से? Indirect conflict between two group of nations. One group was led by US, second group was led by USSR, Russia. Okay, between 1945 to 1991, right? This was a kind of ideological conflict where direct wars were never fought, indirect wars were fought. Okay, so this is a kind of Cold War in general meaning. This is the general meaning of the Cold War. Now we will enter into details. We will try to learn a few more facets. ठीक है ना? This is basically GS class, so I will not enter into more detail, but I will record optional video and I will share it on YouTube. तो अगर आप देखना चाहते हो डिटेल में तो वो देखना, राइट? मतलब if you want to go in detail, there I will discuss different phases of Cold War and etc. But here I am going to discuss all what you need for the GS purpose. वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. Now I will discuss with you some important events, right? And that we must know. For example, one famous Atlantic Charter. This word you might have heard. Atlantic Charter 1941. ये भी सुना होगा आपने, right? Atlantic Charter 1941. The next important word you might have heard was Truman Doctrine. Truman Doctrine, right? 1947. Truman Doctrine 1947. In the same way, the third word which you might have heard was Marshall Plan. Marshall Plan, and it was associated with Truman Doctrine. Marshall Plan was associated with Truman Doctrine, right? So we need to understand about these three topics. Marshall Plan was associated with Truman Doctrine. Got it? Okay. Now, Atlantic Charter was in the year August 1941. Why I am discussing Atlantic Charter? Because it is related to one of the most important topic in modern Indian history, that is Cripps Mission Plan. 1942 में आया. इसका सीधा सीधा कनेक्शन है क्रिप्स मिशन प्लान के साथ, and that's why I am discussing this Atlantic Charter. ठीक है ना? तो देखो, here you can say that this is, you can say that statement, okay, joint statement, okay, of US President Franklin D. Roosevelt and British PM Winston Churchill. दो लोगों का joint statement था. This was called charter. Okay, read this. It was a kind of joint statement that was made by, okay, US President, okay, and US President Franklin D. Roosevelt. US President Franklin D. Roosevelt. US President Franklin D. Roosevelt, and the second important name is British PM Winston Churchill. British PM Winston Churchill. Okay, इन दोनों का joint statement था. Okay, why the name Atlantic Charter? There is a reason. Okay, because this joint statement was made in Placentia Bay, Newfoundland, Atlantic Ocean. Okay, on a US naval base. US naval base पे अटलांटिक ओशन में प्लेसेंटिया बे, ओके, न्यूफाउंडलैंड में ये अनाउंसमेंट किया गया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अटलांटिक चार्टर. दिस इज द रीजन बिहाइंड द नेम. ठीक है ना? अटलांटिक चार्टर का मतलब समझते, व्हाई अटलांटिक? बिकॉज अटलांटिक ओशन में न्यूफाउंडलैंड प्लेसेंटिया बे में एक नेवल बेस पे ये ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अटलांटिक चार्टर. ओके, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यूएस हैड नॉट जॉइंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये वो टाइम था जब ही अभी यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन नहीं किया था. सो दिस इज द टाइम व्हेन यूएस स्टिल डिड नॉट हैव जॉइंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अभी यूएस ने ज्वाइन नहीं किया था. ओके, इसके बाद यूएस ज्वाइन करेगा आफ्टर 1941. एंड इन दिस ज्वाइंट स्टेटमेंट both these leaders will present their vision that, okay, we see which kind of world after the end of second world war. अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म भी नहीं हुआ है,
बट दोनों का पॉलिसी स्टेटमेंट किस बात को लेके है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम कैसा विश्व देखना चाहते हैं. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये रिलेट हो जाएगा डीकोलोनाइजेशन से भी. राइट दिस. ओके. दिस जॉइंट स्टेटमेंट वाज रिगार्डिंग regarding okay the regarding the future of world, regarding the future of new world after conclusion of or end of world war 2. वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो नया विश्व होगा वो कैसा होगा. दिस इज ऑल अबाउट. ओके. तो दोनों मिलके क्या कहते हैं कि इंपेरियलिज्म. ओके. वी व्हाट विल हैपन, इंपेरियलिज्म विल बी चेक्ड अपॉन. कहने वाला कौन है, ब्रिटेन भी है. और ब्रिटिश इंपेरियलिज्म कॉलोनियलिज्म सबसे ज्यादा है. राइट. 2/3 कॉलोनीज को कौन होल्ड करता था, ब्रिटेन. तो दोनों ने मिलकर क्या कहा, ब्रिटेन सॉरी imperialism and colonialism will be checked upon. अच्छा, when imperialism and colonialism will be checked upon, what does it mean? It means that the process of giving freedom to the colonies will start. The right to self-determination of the people who are living in the colonies will be granted. ये खबर कहाँ पहुंचेगी, हिंदुस्तान में भी. लोग क्या करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट कहेंगे, जल्दी से यही टाइम है. अटलांटिक चार्टर से अभी अभी यूएस प्लस यूएस भी कह रहा है, okay, we want a new world which is free from imperialism and colonialism. Britain is saying that yes, we will grant right to self determination, we will promote liberal democracies in the world. Okay, ये सारे के सारे announcements हो रहे हैं. तो with these announcements, don't you think that there will be an impact on ongoing national movement in India? Yes or no? ongoing national movement पे impact तो पड़ेगा ना इस announcement का. और government will have to do something with respect to this announcement. And what happened? Cripps mission was sent to India. Got it? इंडिया में क्या भेजा गया, क्रिप्स मिशन 1942. और क्रिप्स मिशन की नेगोशिएशंस जब फेल हो गई तो इंडियन ने एक लॉन्च किया मूवमेंट जिसका नाम क्या है, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. मेरी बात समझ गया ना. तो क्रिप्स मिशन इज इन द सिंक विद दिस अटलांटिक चार्टर अनाउंसमेंट. तो यहाँ पे लिख दो कि न्यू वर्ल्ड का क्या, कैसा न्यू वर्ल्ड हो. राइट दिस. ओके. check on imperialism and colonialism. Check on imperialism and colonialism. Right to self determination will be given to the people in the colonies. Right to self determination will be given to the people in the colonies. Right to self determination will be given to the people in the colonies. Liberal democracies will be promoted. Liberal democracies will be promoted. That we will also promote liberal democracies in this world. Liberal democracies are related with which system? They are related with capitalistic system. Is it clear? That is one of the most important things, that they are related with capitalistic system. Okay. Now, what is the next part here? That is again very interesting. Okay. The next part is, okay, have you got this idea? अब इस अनाउंसमेंट का ये वाला प्रपोजल देखो, लिबरल डेमोक्रेसीज विल बी प्रोमोटेड. लिबरल डेमोक्रेसी प्रमोट करोगे तो किस आइडिया को प्रमोट करोगे, कैपिटलिज्म. ये बात कौन सुन रहा था, रूस का. अच्छा बेटा, कैपिटलिज्म प्रमोट करोगे. बट अभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है. ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात तो बुरी लगेगी ना. ओके, बट स्टिल दे फॉट टुगेदर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. Now the second important point was Truman Doctrine. These are some of the most important events. Truman Doctrine 1947. So read this. What was the Truman Doctrine 1947? Truman Doctrine 1947. क्या है Truman Doctrine 1947? This we need to understand. ठीक है ना? Now, year was 1947 and British, a US president, okay, Henry S. Truman made an announcement. ठीक है, read this. Henry S. Truman's
announcement in a speech. Announcement in a speech. Henry Truman's announcement in a speech. और वो announcement क्या था? That is very important. Okay? देखो, अब तक what was the US policy? US was following a policy, and the policy was unnecessary. US will not interfere in the unnecessary. US will not interfere. Okay. Hello. सर मैं क्लास okay. Am I audible, Ravi? Am I audible? So, US President Henry Truman made an announcement that till now, US was following a policy and that was unnecessarily. US will not interfere in the regional conflicts. US को regional conflict में interfere नहीं करना था. Now US is saying what? US is saying that now US will not stand in a standby mode. कभी भी कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यूएस वाज इन अ स्टैंड बाई मोड. 1947 वर्ल्ड वॉर हैज कंक्लूडेड. खत्म हो चुका है वर्ल्ड वॉर, एंड यूएस इज सेइंग दैट वी विल नो लॉन्गर बी इन स्टैंड बाई मोड. वी विल इंटरफेयर व्हेन it will be needed, and where US needs to interfere. Okay, Truman is saying that we will promote what? Free and independent nations. We will help free and independent nations so that they could promote liberal democracies, so that they could promote democratic system in this world. We will also provide them help and support. We will also provide them financial help and support. Is it clear? It means now we are not going to allow the forcible expansion of Soviet totalitarianism. सीधा सीधा कहा कि जो सोवियत कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, नई नई कंट्रीज में सोशलिस्टिक मॉडल अडॉप्ट हो रहा है, राइट? और उस समय चाइना में हंगामा चल ही रहा था, पता ही है, 1947 टॉपिक बता चुका हूं, ठीक है ना? केएमटी और सीसीपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? नाउ हियर यूएस इज सेइंग दैट नो, वी विल डू व्हाट? वी विल मेक एफर्ट्स टू कंटेन, ओके, फोर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ सोवियत टोटलिटेरियनिज्म. तो बताओ क्या सोवियत चुप रहेगा? नहीं. और जो हेनरी एस ट्रूमैन ने ये बात जो स्पीच में दी, ये बात स्पीच में कही, लेटर इट बिकम्स पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस. आगे चल के यही क्या हो जाता है? यूएस का फॉरेन पॉलिसी हो जाता है. सो दिस ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, okay, later it becomes foreign policy and important doctrine in the foreign policy in US. What we see is that this is, okay, an important milestone, and we can say that this is considered to be the beginning of Cold War in the technical sense. वैसे तो अटलांटिक चार्टर से भी लोग रिलेट करते हैं, बट इस स्पीच के बाद हम क्या मान सकते हैं? बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर. नाउ इट वाज क्लियर दैट यूएस विल नॉट फॉलो the policy of isolationism. US will play an active role in the world affair. US will not allow the forcible expansion of totalitarianism. And this is considered to be the beginning of Cold War in the technical sense. So write this point. Okay. Important points in the speech. Important points in the speech. Important points in the speech. Right. Point one. US, okay, will not follow the policy of isolationism. US will not follow the policy of isolationism. US will not follow the policy of isolationism. Okay, right. Second point. Okay, US will play an active role in world affairs. US will play an active role in world affairs. Play an active role in the world affairs. Right. Next point.
US will no longer be on standby mode. 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 Right, next point. Okay, US will not allow the forcible expansion of US will not allow the forcible expansion of Soviet totalitarianism. US will not allow the forcible expansion of Soviet totalitarianism. US will not allow the forcible expansion of Soviet totalitarianism. और यूएस जो ये बात कह रहा था यहाँ पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू कंट्रीज, दो कंट्रीज का कॉन्टेक्स्ट था, एक था ग्रीस और दूसरा था टर्की, क्योंकि वहां पे भी ये थ्रेट चल रहा था, अनरेस्ट था, और वहां पे भी कम्युनिस्ट मॉडल के आने का खतरा था। मेरी बात समझ गया ना? तो यूएस ने अनाउंस किया $400 मिलियन का पैकेज, किसके लिए? ओके, ग्रीस और टर्की के लिए। क्यों अनाउंस किया? जिससे कि ये अपना मिलिट्री और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर सकें, और यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट को ला सकें, डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट कर सकें, डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ साथ कैपिटलिस्टिक ऑर्डर को प्रमोट कर सके। तो यूएस ने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया, ठीक है, क्योंकि अगर कैओस है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है ना, तो कम्युनिज्म के एक्सपेंशन का खतरा है। तो उस इंस्टेबिलिटी को कम करने के लिए क्या करो, फंड दो। यूएस ने फंड रिलीज किया, $400 मिलियन का फंड रिलीज किया ग्रीस और टर्की को, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, डेमोक्रेसी आए, साथ ही साथ कैपिटलिस्ट मॉडल का एक्सपेंशन। Okay, so this doctrine is all about Greece and Turkey, but it is also a hint, okay, for future foreign policy of US. Okay, so you can write here that the announcement was made with particular respect to the Greece and Turkey. With respect to the Greece and Turkey, this announcement was made with respect to the Greece and Turkey. Greece and Turkey, right? Greece and Turkey, right? Package was announced for these two countries. Was announced Package was announced for these two countries. Package was announced for these two countries, right? $400 million package for military and economic assistance. $400 million package for military and economic assistance, and to give support to build democracy and capitalistic system, and to give support to build democracy and capitalistic system. Okay, to build democracy capitalistic system. Right, next point. To protect these countries from the growing threat of Soviet authoritarianism. To protect these countries from the growing threat of to protect these countries from the growing threat of Soviet to protect these countries from the growing threat of Soviet authoritarianism. ठीक है, सोवियत ऑथोरिटेरियनिज्म का जो खतरा था उससे बचाने के लिए। समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मार्शल प्लान, राइट? तो मैंने क्या बताया था, मार्शल प्लान was in accordance with Truman Doctrine, ठीक है? So read this. So Marshall Plan was enacted. Marshall Plan was enacted. Marshall Plan was लाया गया. Marshall Plan was enacted. This Marshall Plan was in accordance with, okay, Truman's speech. In accordance with Truman's speech. ट्रूमैन ने अपनी स्पीच में जो बात कही थी, ये उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया। गॉट इट? इन अकॉर्डेंस विथ ट्रूमैन्स स्पीच। ओके, ईयर वाज 1948। मार्शल प्लान, ईयर वाज 1948, राइट? ईयर वाज 1948। ओके, राइट। व्हाट हैपेंस हियर? देखो, ये स्पीच पॉलिसी डिसीजन बन गया कि नहीं? स्पीच पॉलिसी बन गया कि नहीं? बन गया। Truman's speech becomes the foundation of a policy. Marshall Plan, US foreign policy. That's why this is called Truman's Doctrine.
यहां भी फंड एलोकेट किया गया। मार्शल प्लान में भी, राइट दिस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, मार्शल प्लान को साइन किसने किया था? द सेम पर्सन, हेनरी एस ट्रूमैन, राइट, द सेम पर्सन, Henry S. Truman signed this Marshall Plan, and according to this plan, read this, 13 billion US dollar package, 13 billion, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 13 billion US dollar package was given to Western European countries for their social and economic reconstruction. 13 billion US dollar package was given to Western European countries. 13 billion US dollar package was given to Western European countries for their social and economic reconstruction. For their social and economic reconstruction. For their social and economic reconstruction. And to protect them from the growing, to protect them from the forcible expansion of, to protect them from the forcible expansion of सोवियत ऑथोरिटेरियनिज्म। देखो बार बार वर्ड क्या यूज किया जा रहा है, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ सोवियत ऑथोरिटेरियनिज्म, ओके, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ सोवियत ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है, दिस विल हैपन, गॉट इट, to protect them from the growing threat of Soviet authoritarianism. And very soon was what we see. Okay, इसके बाद फिर से क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज नाटो। नाटो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, 4th April 1949, so the year was 1949, right, this NATO, this is a military bloc. A military bloc also came into existence, NATO, military bloc, got it, North Atlantic Treaty Organization, military bloc came into existence, ठीक है, क्या है ये? Read this. It was an intergovernmental, it was an intergovernmental, intergovernmental, right, military alliance. ये क्या है? Intergovernmental military alliance, तो हो तो गया military bloc, okay, and this bloc was led by which country? US. US was leading this bloc, ठीक है ना, US इस ब्लॉक को क्या कर रहा था? लीड कर रहा था, राइट, ओके, और इस ब्लॉक में कौन सी कंट्रीज थी नेटो वाले ब्लॉक में? ओके, यूएस प्लस वेस्टर्न यूरोपियन कैपिटलिस्टिक नेशंस, ठीक है ना, वो सारी की सारी कंट्रीज थी, इसमें सोशलिस्टिक कंट्रीज नहीं है, तो यूएस है, प्लस यू कैन राइट दिस वेस्टर्न यूरोपियन कैपिटलिस्टिक कंट्रीज, ओके, इन सब का ब्लॉक है, इन सब का ब्लॉक है, ठीक है, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, it was based on a system of collective defense, right, next point, the purpose was to ensure collective security in Western Europe, the purpose was to ensure collective security, okay, in Western Europe, the purpose was to ensure collective security in Western Europe. अब आप ये बताओ कि यूएस और रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ साथ लड़े थे, अब ये सब कुछ जो होगा तो क्या यूएसएसआर चुप रहेगा? नहीं, तो इस नाटो ब्लॉक का, राइट दिस, अ काउंटर अलायंस विल आल्सो कम इनटू एग्जिस्टेंस, अ काउंटर अलायंस और काउंटर मिलिट्री ब्लॉक विल आल्सो कम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज नोन एज वार्शा पैक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं? वार्शा पैक्ट, अ काउंटर अलायंस विल आल्सो कम इनटू existence and that is known as Warsaw Pact 1955, 1955, okay, this was also a mutual defense treaty, right, this, it was also a mutual defense treaty, जैसे ये mutual defense के लिए था, it was also for a kind of mutual defense treaty, ये भी क्या था? It was a kind of mutual defense treaty, इसका नाम था the treaty for, right, this, the treaty for friendship, cooperation and mutual assistance, the treaty for friendship, cooperation and mutual assistance, friendship, cooperation and mutual assistance, इस ट्रीटी में कौन कौन सी कंट्रीज होंगी? ओके, रशिया,
Soviet Union, its satellite states will be in this block. Read this: Russia, Soviet Union, and its satellite states will be in this block. वो इस block में होंगे. Got it? Right? ये वार्शा पैक्ट खत्म हो जाएगा कब? With the disintegration of USSR, 1991. Write this point. Warsaw Pact ended in 1991 with the disintegration of USSR. जैसे ही USSR का disintegration होगा, right, Warsaw Pact will come to an end with the disintegration of USSR. ठीक है ना? Warsaw Pact will come to an end with the disintegration of USSR. और NATO का मामला पता ही है, यूक्रेन, रशिया, NATO. ठीक है? तो what is happening? Now the picture is very clear to you that after Second World War, okay, two important nations, right? अच्छा देखो क्या होगा. मेन पार्टिसिपेंट नेशन शुरू से ही जो लड़ रहा था वो ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, जर्मनी था. जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिर गया. तो ये तो लड़ लड़ के खुद ही कमजोर हो गए. ब्रिटेन की ताकत सबसे ज्यादा क्या थी? व्हाट वाज द ब्रिटेन्स मेन स्ट्रेंथ? कॉलोनियल एम्पायर. एंड कॉलोनियलिज्म केम टू एन एंड. कॉलोनियलिज्म में रैंक 1 पे कौन था? ब्रिटेन. ठीक है. रैंक 2 पे कौन था? फ्रांस. And the process of colonialism came to an end. The process of decolonization started after Second World War. तो ब्रिटेन और फ्रांस तो वैसे भी कमजोर हो जाएंगे. इसका पहला रीजन, मेन पार्टिसिपेंट ऑफ वॉर. They fought First World War also. They fought Second World War also. They were main participant of war in Second World War also. Plus, after Second World War, they will start losing their colonial empire. That was the main source of income for them. तो ब्रिटेन और फ्रांस तो ऐसे कमजोर हो गए. Against Japan, we see Japan was an important nation. It was a military nation. Okay, it fought. You can say that it was a very powerful nation. It was also making imperialistic claims, but nuclear weapons were dropped on Japan. ये भी पढ़ चुके हैं. जापान की भी कहानी खत्म. What about Italy and Germany? Germany was a powerful nation, but fought First World War also, Second World War also, and this time Germany power was completely crippled. Germany एकदम पंगु हो गया. Italy's power was also completely crippled. बच कौन गया? बताओ. एक तरफ यूएस. वाई यूएस? देखो, यूएस ज्वाइंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आल्सो इन अ लेट स्टेज. यूएस ज्वाइंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर आल्सो इन अ लेट स्टेज. यूएस वाज मेनली फोकसिंग ऑन व्हाट? ध्यान से समझना. इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. अटलांटिक चार्टर आपने देखा और मार्शल प्लान देखा. यूएस का क्या था मोटिव? दैट अननेसेसरीली यूएस विल नॉट एंटर इनटू द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स. याद करो ब्रिटेन को. जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसके पहले ब्रिटेन वाज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन. अलग थलग रह के झगड़े में पड़ोगे तो बहुत आगे विकास नहीं कर पाओगे. ठीक है. आपकी लिमिटेशन हो जाएगी. बहुत सीधी सी बात है. तो आपको आइसोलेशन फॉलो करना पड़ता है. एंड द सेम वाज हैपनिंग, राइट? यूएस आल्सो फॉलोड द सेम पॉलिसी, कीपिंग इटसेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स. एंड नाउ यूएस वाज एन इंडस्ट्रियल जायंट. एंड व्हेन प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन विल स्टार्ट, who will get advantage of this? US will get advantage of this. US will be able to get new markets for the promotion of its trade and commerce and commercial interest. याद करो the case of China that I have discussed with you. China was born of contention between US and Japan. क्यों US बार बार चाइना को प्रोटेक्ट कर रहा था जापान से? ठीक है. जापान के imperialistic okay efforts or the Japan's attacks on China, why US was opposing? Because if China will be independent, if China will come under the control of Japanese, so Chinese market will come in control of Japan. Okay, China's independence will be maintained, so US can use the Chinese market. It was also an objective. On the other side, after 1917 Russian Revolution, Russia was following a socialist model. Got it? In this model, it was also developing its satellite states, and it was promoting trade and commerce among these satellite states. And this model was okay changed multiple times, revised multiple times. मैंने बताया Russian Revolution के बाद. What happened? Okay, after Russian Revolution, war, communism as the economic policy will come. Then what happened? Which policy will come after war, communism? NEP will come, and many more revisions were done. Okay, so Russian economic model was performing better, right? These countries, Soviet economies, okay, they were not heavily affected by the Great Economic Depression. उसका भी असर इन पे नहीं पड़ा था. And that's why this idea was becoming
popular day by day. And what about socialism? Socialist idea is what? एंटी इंपेरियलिस्टिक, एंटी कॉलोनियल आइडिया। मेरी बात समझ गए ना? ये एंटी इंपेरियलिस्टिक भी है, एंटी कॉलोनियल भी है। और लोगों को ये लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, why it is fought, what is the main reason behind this? Because imperial powers are fighting to establish control over territories, their territorial greeds are never coming to an end. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उन्हीं की वजह से हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इन्हीं की वजह से हुआ है. So the kind of nihilism was promoted in the mind of people, and in this scenario the people have started accepting which model? कम्युनिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट इकोनॉमी. और ये बड़ा खतरा हो गया था किसके सामने? कैपिटलिस्टिक मॉडल के सामने. सो दिस इज लाइक अ चैलेंज. ओके, नाउ दीज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट केम टू द सरफेस. दिस इज नोन एज कोल्ड वॉर. इसी को हम क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर. इज इट क्लियर? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज will come under the influence of capitalistic model, and Eastern European countries, okay, in Eastern European countries we see rapidly what will happen. Okay, the influence of socialism will keep on increasing or growing. ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में तेजी से सोशलिस्टिक आइडियाज, कम्युनिस्ट आइडियाज का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, वहीं वेस्टर्न यूरोप में क्या होगा? सोशलिस्ट आइडियाज. एंड व्हाट अबाउट 1949? देखो 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन, that is Chinese revolution will bring what? CCP, Chinese Communist Party. So which model will be adopted here? Communist model. Russian revolution तो model socialist आ ही चुका था. Now Chinese revolution, Chinese Communist Party will become successful, and this is another threat for the US. ठीक है, उनके लिए दूसरा थ्रेट है, क्योंकि कम्युनिस्ट मॉडल में राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश हो जाएगा. ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट आ जाएगा. तो चाइनीज रेवोल्यूशन वाज आल्सो, ओके, यू कैन से दैट इट वाज लाइक अ चैलेंज फॉर द यूएस. तो बताओ 1945 में व्हेन यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाज फॉर्म्ड, तो यूएस ने क्या किया? कहा नहीं नहीं भाई, चाइना को परमानेंट मेंबर बनाओ. और जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हो जाता है चाइना में 1949 में, तो यूएस कहता है चाइना को परमानेंट मेंबर से हटाओ. मेरी बात समझ गया ना? तो ये यूएस का क्या है? चेंज इन आउटलुक. ठीक है, 1945 में इज सेइंग दैट चाइना को परमानेंट मेंबर बनाओ, 1949 यूएस इज सेइंग दैट चाइना को परमानेंट मेंबर से हटाओ. ओके, तो चाइना यूएनएससी का परमानेंट मेंबर किसके सपोर्ट से बना? इन्हीं कंट्रीज के सपोर्ट से बना ना, राइट, विद द सपोर्ट ऑफ दीज कंट्रीज. नाउ व्हेन दिस कोल्ड वॉर स्टार्टेड, कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि देयर आर टू ग्रुप ऑफ नेशंस, and both these two group of nations will project each other as villains of humanity. यूएस वाले रशिया वालों को क्या दिखलाएंगे? विलन्स ऑफ ह्यूमैनिटी. हॉलीवुड की फिल्मों में विलन हमेशा किधर से होता है? देखो, रशिया से ही होता है. कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहा होता है, दुनिया को तबाह करने का प्लान बना रहा होता है. ठीक है, अभी भी देखो बहुत सारे फिल्मों में विलन उधर से आता है, रशिया से. ड्रग कार्टेल, माफिया, रशियन माफिया. ठीक है, अभी भी दिखाते. So in that phase, this is the time period 1945 to 1991. ठीक है ना? क्या होगा इस फेज में? Both these two group of nations, US and USSR, okay, no direct conflict. आमने सामने की लड़ाई नहीं हो रही है. अच्छा, ज्यादा खतरनाक क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में तो जो होना है झगड़ा होगा, बातें तय हो जाएंगी, है ना. हस्बैंड वाइफ में अक्सर क्या चलता रहता है? कोल्ड वॉर. ठीक है, लोग परेशान रहते हैं. रूम पार्टनर्स में क्या चलता रहता है? कोल्ड वॉर. आपस में ही नाराज रहते हैं. तो कोल्ड वॉर ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है. देयर इज नो एनी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट. नाउ बोथ दीज टू ग्रुप ऑफ नेशंस वर डूइंग व्हाट? ओके, राइट दिस, वेर promoting propaganda against each other. Propaganda against each other. एक दूसरे के खिलाफ क्या प्रोमोट कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा. प्रोपेगेंडा अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है, प्रोपेगेंडा में किस चीज का हेल्प लिया जाएगा? स्टोरीज, कार्टून्स, पोस्टर्स, स्टोरीज, कार्टून्स, पोस्टर्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, राइट, फिल्म्स. ओके, all these mediums will be used. Newspaper, stories, cartoons, radio broadcast, etc. All these mediums will be used,
And what is the propaganda? To villainize each other. To villainize each other. This was the propaganda. To villainize each other. It means that US will project Russia as the villain of humanity, and Russia will do the same. It will project US as the villains of humanity. ठीक है, दोनों एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, but yes, this is the propaganda, right? Both are okay trying to. अच्छा देखो, प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है? जैसे मान लो कि मैं रवि की बुराई कर रहा हूं आप सभी लोगों से, इट मीन्स दैट आई एम ट्राइंग टू गेन द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू अगेंस्ट रवि। ठीक है, कि मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूं कि रवि बहुत बदमाश लड़का है, इज नॉट अ गुड गाय, ठीक है, बच के रहना। ठीक है, तो ऐसी बात मैं कह रहा हूं, व्हाई? सो इन ऑर्डर टू गेन द सपोर्ट ऑफ न्यू कंट्रीज। ठीक है, US is also trying to gain the support of new countries. USSR is also trying to gain the support of new countries. And why I am writing new countries? क्यों कह रहा हूं? Because 1945 onwards, what is happening? 1945 onwards, what we see? Read this. The process of decolonization had also started. The process of decolonization has also started. Decolonization is what? The process of giving freedom to the colonies. Okay, that is called decolonization. So the process of decolonization has also started. The process of giving freedom to the colonies have started. ये 1945 से शुरू हुआ था कि बहुत पहले हो चुका था? बहुत पहले हो चुका था। याद करो, यूएस, independence of US, that is also an example of decolonization. But here we see what? Rapid decolonization. This start. So नए countries like India becomes free in 1947, right? Pakistan becomes a new independent nation. Sri Lanka, Myanmar, there are so many countries which will become free. US क्या चाहेगा? ठीक है, कि मेरी तरफ आ जाओ। USSR क्या चाहेगा? मेरी तरफ आ जाओ। ठीक है, दोनों अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। So they will try to do what? They will try to project each other as villains to gain the support of new independent nation. That is the most important thing. So this is what? This is a strategy that was followed during the Cold War. So number one strategy is what? Promoting propaganda against each other. What is strategy number two? Right? Strategy number two. What is strategy number two? Right? Foreign aids, foreign support, assistant or aids. फॉरेन एड्स क्यों कह रहा हूं? अब आप समझो इस बात को, फॉरेन एड्स क्यों कह रहा हूं? अभी आपने देखा ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान, क्या दिया? पैसा, राइट? फॉरेन एड्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ओके, टू द कंट्रीज। यूएस इज गिविंग टू ग्रीस एंड टर्की, कि वहां पे कौन सा सिस्टम है? कैपिटलिस्टिक मॉडल है, राइट? इन द सेम वे सोवियत यूनियन भी अपना एकदम ब्रीफकेस में पैसा लेके घूम रहा है, ले लो भाई। और न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस नीड व्हाट? उनको क्या चाहिए? पैसा। फॉर व्हाट? फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनको पैसा चाहिए ना, बिकॉज दे हैव सफर्ड सेंचुरीज ऑफ okay colonial subjugation, so their economy has already been damaged, so they need money. And both these two countries, US and USSR, both will okay start giving financial assistance। ठीक है, यूएस आपको 100 रुपीज देगा तो यूएसएसआर अगले दिन आपके अकाउंट में 200 रुपीज ट्रांसफर करेगा, कहेगा देखो बेटा मैंने दिया। ठीक है, फिर यूएस कहेगा देखो मैंने 300 रुपीज दिए। ये वाली रेस शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस। एग्जाम्पल आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान। ओके, यहाँ पे ट्रूमैन डॉक्ट्रिन से क्या था? यूएस गेव ओके 400 मिलियन यूएस डॉलर सपोर्ट टू टर्की एंड ग्रीस। ठीक है ना? एंड मार्शल प्लान में क्या था? 13 बिलियन यूएस डॉलर सपोर्ट वाज गिवन टू द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। वहीं उस दूसरी तरफ क्या हो रहा था? यूएसएसआर गेव सपोर्ट टू द इजिप्ट, इजिप्ट को हेल्प कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ओके ओके, सो दिस वाज बीइंग डन। ठीक है, इजिप्ट में डैम बनाना है, यूएसएसआर विल से मैं पैसा दूंगा। ठीक है, दोनों में होड़ लगी है कि पैसा कौन देगा। तो वाई फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसा क्यों दे रहे? ताकि ये जो नई कंट्रीज है वो हमारे आइडियोलॉजिकल ग्रुप में शामिल हो जाए। सो दिस वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियोलॉजीज। ओके, नाउ राइट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ओके, थर्ड पॉइंट इज राइट,
एस्पियोनेज, एस्पियोनेज, एस्पियोनेज मीन्स जासूसी, जासूसी, ठीक है। यूएस अपने जासूस कहाँ भेजेगा? यूएसएसआर में। और यूएसएसआर अपने जासूस कहाँ भेजेगा? यूएस में। स्पाई प्लेन्स विल बी यूज्ड, ठीक है। यूएस लगातार यूएसएसआर पे नजर बनाए रखेगा कि इसने न्यूक्लियर वेपन बनाया कि नहीं, कौन कौन सी मिसाइल्स बना ली, ठीक है। यूएसएसआर हमेशा किसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी चेक करता रहेगा? यूएस की। ओके, सो दिस इज व्हाट? एस्पियोनेज, एक दूसरे की जासूसी करवाते रहो। दिस इज आल्सो व्हाट? कोल्ड वॉर, ये भी कोल्ड वॉर है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज राइट, पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप, policy of brinkmanship was also used, policy of brinkmanship will also be used. And what is this policy of brinkmanship? So देखो, it will appear that both these two group of nations or that these two superpowers are on the verge of initiating war, but the war will not start. ऐसा लगेगा कि अब लड़ाई हो ही गई, हो ही गई, हो ही गई, लेकिन होगी नहीं। जैसा रोड रेज में होता है, आपकी स्कूटी बाइक किसी से टकरा जाते हैं, फिर आप उतर के तो अरे देख लूंगा तुमको, वो भी कहता है मैं भी तुमको देख लूंगा, ठीक है। फिर दो चार लोग दोनों लोगों को पकड़ते कहते भाई लड़ाई मत करो, फिर लोग कहते हैं अच्छा छोड़ दो, जाओ भैया लड़ लो, और जब छोड़ते तो आप दोनों एक दूसरे से लड़ते ही नहीं। इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप। माहौल बनाओ, ठीक है, कि लड़ाई होने जा रही है, होने जा रही है, और लास्ट में आके लड़ाई होगी ही नहीं, राइट। सो ब्रिंकमैनशिप इट मींस व्हाट? द टेंशंस, ओके। एंड नाउ you can say that the entire world will live in a fear that both these two superpowers, both these two group of nations, there are two military blocks and the war can start anytime. Okay, it will appear that the war is going to start, but the war will never start, वॉर होगा ही नहीं। दैट इज व्हाट? पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप, ठीक है। माहौल बना के दूसरे को डराए रखना, ये वाला चल रहा था सिस्टम। अब इसका एक बड़ा ही एग्जांपल अच्छा है, द पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप। द वेरी गुड एग्जांपल हियर इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्या था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप? इन सिंपल वर्ड्स आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है, हंसी मजाक में इसको समझ लेते हैं। देखो, on one side there was US and on the other side there was USSR. Here basically we are talking about Russia. Got it? Okay. So US had already developed the capability that if US, okay, US could easily target USSR. मेरी बात समझ गया ना? इसके जो मिलिट्री पोस्ट थे वो सब कुछ इतने स्ट्रेटेजिक थे that US could easily target USSR. ठीक है ना? Now USSR had also developed missiles, that is LRBM, long range ballistic missiles, but they were not capable of hitting US. इसकी मिसाइल्स यूएस को डायरेक्टली हिट नहीं कर पा रही थी, ऐसे समझो, ठीक है ना? ठीक है, यूएसएसआर, रशिया, ओके, वाज नॉट केपेबल टू हिट यूएस डायरेक्टली। तो क्या करेगा? ये एक तरीका निकालेगा। यहाँ पे यूएस के पास एक कंट्री है क्यूबा, ठीक है, और क्यूबा कौन से मॉडल को अपना लेगा? सोशलिस्टिक मॉडल, right? And now USSR, Russia will do what? Will place its missiles in Cuba. उसके बाद ये अपने मिसाइल्स ले जाके कहाँ रख देगा? क्यूबा में, ठीक है। अब पहले आपको यहाँ से टारगेट करना था यूएस को, आपकी मिसाइल का रेंज कम पड़ रहा था, अब आपने मिसाइल उसके घर के बगल में ले जाके रख दिया, इसका मतलब आप कभी भी टारगेट कर सकते हो। अब सारी दुनिया डर गई। अब तक तो ये हो रहा था कि भाई यूएसएसआर मिसाइल्स आर नॉट केपेबल ऑफ हिटिंग यूएस डायरेक्टली, so that's why the war is being avoided. Now the problem is what? US is capable of hitting Russia, and Russia has placed its missiles in Cuba. Now Russia is also capable of hitting Cuba. US will oppose and there will be tension. The entire world will live in a fear कि अगले दिन सुबह वर्ल्ड वॉर थर्ड शुरू होने ही वाला है, जैसे आजकल हमारी हालत है। तो रोज ये न्यूज चैनल वाले, है ना, हिंदी वाले तो खास तौर से जो तांडव मचाते हैं, रात को सोते सोते ऐसा लगता है यार कहीं जगह तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू हो जाए, ठीक है। उनको पता नहीं क्या मजा आता है, शुरू होने जा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर। मैं भी क्लास शुरू करने जा रहा था, उसके पहले ही थर्ड वर्ल्ड वॉर ये शुरू करा चुके थे, ठीक है, रोज करा देते हैं। सो द सेम वाज हैपनिंग हियर, राइट? ओके, सो दैट इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप। गॉट इट? एग्जाम्पल बस लिखना है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। पूरी स्टोरी तो हम लिख नहीं पाएंगे ना, यू आर ऑलरेडी हैव सीन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। 150 वर्ड्स क्वेश्चन तो क्या ही कर सकते हो, ठीक है। वो तो पूरा पूछ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर,
पूरा बताओ 150 वर्ड 200 वर्ड्स में. सो वी डोंट नीड टू इंटर इनटू मच डिटेल्स. ठीक है ना. केवल ऐसे आसान भाषा में कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के कॉन्सेप्ट को समझना है एंड देन वी हैव टू कनेक्ट द थिंग्स. दिस मच वी हैव टू डू. तो यहाँ पे और भी टेक्निकल चीजें, बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट. आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ स्ट्रेटजीज में नेक्स्ट स्ट्रेटजी कितने स्ट्रेटजीज हुई? 3 और 4. हाउ मच यू हैव रिटन? 4. Okay. Now the next strategy is, right, multinational alliances. Multinational alliances, or you can say that military alliances. ये भी तो एक strategy है. Okay, है कि नहीं? Is it a strategy? Yes. US supported NATO bloc and USSR supported Warsaw Pact. This is also a strategy. US supported NATO bloc and USSR supported Warsaw Pact. This is also a strategy. So write this. This is also a strategy. Now the next strategy was surrogate wars. Write this, or proxy wars. Surrogate wars or proxy wars. Surrogate mother भी आपने सुना होगा. That's direct mother or indirect mother. Indirect mother. In the same way, surrogate war means what? समझो इस बात को. What is the meaning of surrogate war? Simple सा example. We are taking the example of Afghanistan. अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है ना. इन अफगानिस्तान व्हाट विल हैपन? अफगानिस्तान में क्या होता है? यूएसएसआर, रशिया विल सेंड इट्स आर्मी. ये अपनी आर्मी भेजेगा 1979. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंडिंग आर्मी? ओके, टू फाइट अगेंस्ट रेडिकल आउटफिट्स, मुजाहिदीन. मुजाहिदीन से लड़ने के लिए अपनी आर्मी भेजेगा. ठीक है. एंड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन, ओके, अफगानिस्तान. सो यूएसएसआर विल सेंड इट्स आर्मी टू फाइट अगेंस्ट मिलिट्री आउटफिट्स. ठीक है ना. तो यूएसएसआर विल सेंड इट्स आर्मी. नाउ व्हाट विल हैपन? यूएसएसआर अपनी आर्मी तो भेज रहा है. ठीक है. अब यूएस क्या करेगा? यूएस विल गिव फाइनेंशियल हेल्प, military help and support to mujahideens. Got it? US will give financial help and military support to mujahideens. अब ये बताओ कि now mujahideens have become more powerful or not? Yes, they are getting weapons, financial help and military help and support from US. Now this war will turn into a prolonged war. ये war किस में बदल जाएगा? Prolonged war में. 10 years. 10 years. Till 10 years. The USSR army will be present in Afghanistan. And finally they will return. Last में वो लौट जाएंगे वापस. Right? They will not be able to control these military outfits, मुजाहिदीन्स. इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. तो why USSR failed in Afghanistan? Because US helped मुजाहिदीन्स. ठीक है. तो क्या यूएस ने डायरेक्टली यूएसएसआर से लड़ाई करी? नहीं. अफगानिस्तान became the battleground. अफगानिस्तान क्या हो गया? Battleground. Right? And these two nations are not fighting directly, they are fighting indirectly. Here they are fighting proxy war. Here they are fighting surrogate war. Is it clear? So US supported mujahideens. Now the same mujahideens will do what? ये भूत किसने तैयार किया? यूएस ने. अब ये भूत किसके पीछे लग जाएगा? यूएस के पीछे. ठीक है. आपने हथियार दे दिया, आपने पैसा दे दिया, आपने उनको बॉम्ब बनाना सिखा दिया, आपने उनको राइफल चलाना सिखा दिया. नाउ व्हाट विल हैपन? In the name of controlling terrorism, US is still fighting with these terror outfits. आज तक US is fighting with terror outfits. ठीक है ना. तो टेररिज्म को पहले बढ़ाया अपने फायदे के लिए, और फिर अभी तक उस टेररिज्म से वो फाइट भी कर रहा है. We all are fighting, we all are suffering. So this is called surrogate war. And there are so many examples. This is not a single example. Okay. Vietnam War was a surrogate war. Read this. Vietnam War was a surrogate war. In the same way, okay, Korean conflict was surrogate war. Korean conflict was a surrogate war. This conflict is known as Soviet-Afghan conflict. It was also a surrogate war. Soviet-Afghan conflict was also a surrogate war. Is it clear? Okay, Chinese Revolution. I have already discussed with you this concept. Chinese Revolution. Was it a surrogate war or not? Yes or no? KMT and CCP.
कॉमिंटन एंड सीसीपी। केएमटी को कहां से हेल्प और सपोर्ट मिल रहा था? was getting help and support from the capitalistic countries. ठीक है, हालांकि 1945 to 1949 was the period when the situations were tense. देखो 1949-45 से 1949 यहाँ पे है सिविल वॉर। अब प्रॉब्लम क्या है कि देयर वर टू पार्टीज केएमटी एंड सीसीपी, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इफ यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, they will directly come in support of KMT, so there are chances that Russia could directly come in support of CCP. So here these liberal capitalistic nations will avoid giving direct help and support. ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे बट डायरेक्ट हेल्प और सपोर्ट नहीं करेंगे। अब फैसला होना है इन दोनों के पावर से। नाउ सीसीपी के पास क्या हो गया था? सपोर्ट ज्यादा हो गया था, पॉपुलर सपोर्ट, पॉपुलर अमंग द विलेजेस। द सोल्जर्स आर मोर डिसिप्लिन्ड, दे आर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब गरीब किसान सोच रहा है डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट किसने समझा दिया है, ठीक है, कि तुम्हारे बॉस की मर्सिडीज जाने वाली है, ठीक है, पोर्शे चली जाएगी, तुमको मिल सकता है, ठीक है। अब ये भावना जब आपके अंदर आ गई तो फिर तो यू विल बी अ मोर डिसिप्लिन्ड वॉरियर। ओके, so that is what that is also the reflection of what, this is also the reflection of Cold War. Got it? So this is what we have studied in Cold War, right? Now with the same Cold War we see another Cold War, समझ गए? ठीक है, एक और टॉपिक पहले समझते हैं, दोनों को रिलेट करते हैं एक दूसरे से। Now I think that you can easily write a simple answer on Cold War. 150 वर्ड तो लिख ही सकते हो। You can write about strategies, you can write about important wars, ठीक है ना? ओके, इतनी चीजें लिख सकते हो। Now बिफोर वी डिस्कस विथ यू, ठीक है, एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं, बर्लिन ब्लॉकेट। ओके, बर्लिन क्राइसिस, ये क्या है समझ लो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बर्लिन ब्लॉकेट, ब्लॉकेट और बर्लिन क्राइसिस, बर्लिन क्राइसिस, राइट? बर्लिन ब्लॉकेट और बर्लिन क्राइसिस। ओके, द ईयर वाज 1958, year was 1958. Now Berlin क्या था? Berlin was the capital of Germany, ठीक है, and Germany was defeated power in Second World War, ठीक है। So Berlin क्या है? It was the capital of Germany, and Germany was among the defeated powers. Germany was among the defeated powers in Second World War. So who will decide the fate of Germany? Victorious powers will decide the fate of Germany. The same happened. So here what we see that the victorious powers will decide, the victorious powers will decide the fate of Germany. Now victorious powers will decide the fate of Germany. Clear? Now this Berlin was divided. After Second World War, Berlin was divided. Berlin was divided. And when Berlin was divided, victorious powers में कौन कौन था? Britain, France, US and Russia. Okay, Britain, France, US and Russia. Got it? Now let's consider division of Berlin. One part, second part, third part and fourth part. ठीक है, एक एक पार्ट सबके हिस्से में है। Let's consider this part comes under the control of Britain, this part comes under the control of France, this part comes under the control of US. All these are capitalistic countries. तो यहाँ पे कौन सा मॉडल पॉपुलर होगा बताओ? यहाँ पे कौन सा मॉडल होगा? कैपिटलिस्टिक मॉडल। इट मींस इन द सेम बर्लिन, okay, these three powers are now controlled by capitalistic power. So here which model will become popular? So capitalistic model will become popular. Now this part, one part came under the control of Russia, so this part came under the control of Russia, okay, और रशिया यहाँ पे कैसे मॉडल को प्रमोट करेगा? सोशलिस्टिक मॉडल। रशिया इज प्रोमोटिंग सोशलिस्टिक मॉडल, दीज थ्री आर प्रोमोटिंग कैपिटलिस्टिक मॉडल। नाउ प्रॉब्लम क्या है? जैसे कोरोना में आमने सामने बिना मास्क के आ गए तो कोरोना फैल सकता है, द सेम विल हैपन हियर आल्सो, दैट देयर इज अ थ्रेट। क्या थ्रेट है?
that this communist model, socialist model, okay, if it will perform better here, so there are threat that this will become popular in western part also. Okay, it means this is West Berlin and this is East Berlin, and if socialistic model will become popular here, there is a threat that this will become popular in that part. ठीक है, और इनको क्या डर लग रहा है कि अगर यहाँ पे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, यहाँ के लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया, उनके पास अच्छे अच्छे घर हो गए, ठीक है, इनका बिजनेस ठीक ठाक चल गया, तो इसका असर किस पे पड़ जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा। तो लोगों ने क्या कहा, कहा रुको, इस पूरे के पूरे हिस्से को ब्लॉक कर दो। दिस इज कॉल्ड बर्लिन ब्लॉकेड, इसको कहते हैं बर्लियन ब्लॉकेड। इट मीन्स देखो कितना प्रॉब्लम हुआ होगा उस समय के लोगों को। इन ऑर्डर टू कंटेन द आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, ब्लॉकेड वाज डन, एंड दैट ब्लॉकेड इन हिस्ट्री इज नोन एज बर्लिन ब्लॉकेड। ठीक है ना, बर्लिन ब्लॉकेड कहा जाता है। इवन द मतलब वहां पे आप पैसेंजर ट्रैफिक तक को बैन कर दिया गया, आप इधर से उधर नहीं जा सकते, उधर से इधर नहीं आ सकते। ठीक है, ये सिस्टम हो गया, दैट इज नोन एज बर्लिन ब्लॉकेड। हैव यू गॉट दिस आइडिया? It means both these groups were trying to do what? They were trying to contain the ideological influence of each other, and that is known as Cold War. ये बात आपको समझ में आई? Okay, so containing ideological influence of each other by using various strategies, okay, in an absence of indirect conflict or war is known as Cold War. So you can define Cold War according to, okay, your style, अपने तरीके से जो आपको समझ में आए कोल्ड वॉर में लिख सकते हो, there is no any problem, right? Decolonization, now we are going to discuss the process of decolonization. Decolonization, so what is decolonization? Write the definition first. Okay, the process of giving freedom to the colonies, the process of giving freedom to the colonies is known as decolonization. The process of giving freedom to the colonies is known as the process of decolonization. Okay, it means that, okay, देखो, if someone asks that when it started, when process of decolonization started, you will give example of US, independence of US, सबसे पहला तो एग्जाम्पल यही देना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। Independence of US 1776, it means which century is this? This is 18th century. Clear? This is second half of 18th century. You will say that second half of 18th century, the process of decolonization started. US was a British colony, and US was the first British colony to get freedom from Britain, and that is what? Decolonization. A colony becomes free. That is decolonization. And now, in the process of colonialism, okay, Britain holds number 1 rank. Britain के पास क्या था? पहला रैंक. France holds second rank in the process of decolonization. Britain का पहला रैंक, France का दूसरा रैंक. Okay. Now other countries also had colonies ना. इटली के पास भी था, जर्मनी के पास था, स्पेन के पास था, पुर्तगाल के पास था, डच के पास था, right? Other powerful countries of Europe, right? This other powerful countries of Europe also developed colonies. Other powerful countries of Europe also developed colonies, right? Now, most of these colonies were situated in which continents? So the answer is Asia, Africa, and Latin America. Majority of the colonies, you can say, were in these continents: Asia, Africa, and Latin America. सारी colonies क्या यहीं पे है, ठीक है, majority of the colonies. And Britain was controlling almost two-third colonies, ठीक है, out of all colonies. Two-third colonies पे किसका कब्जा था? ब्रिटेन का कब्जा था. And that's why it is said that, okay, the sun never sets on British Empire.
ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है. नाउ दिस इज वन पार्ट. नाउ व्हाट हैपेंड, जस्ट remember some points. Now when US will become free, US will become free, okay, so it is what this country will oppose imperialism. So its ideas are guided by anti-imperialism, ideas are guided by anti-colonialism, okay, and here it will also oppose any kind of racism, so anti-racism. तो यूएस में हम क्या देखते हैं, एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी racism. We are discussing two countries because these two are the superpowers after 1945. 1945 के बाद एक यूएस है, दूसरी तरफ कौन है, रशिया. रेड दिस, रशिया. तो रशियन रिवॉल्यूशन 1917, that was a socialistic revolution. रशियन रिवॉल्यूशन 1917 was a socialistic revolution. ठीक है ना, ये तो सोशलिस्टिक रिवॉल्यूशन था. एंड सोशलिज्म, राइट दिस, socialism as an idea was against all forms of exploitation. Socialism again was against all forms of exploitation. सभी तरह के एक्सप्लॉयटेशन के आपको अपोज करता था सोशलिज्म. सोशलिज्म एज एन आइडिया वाज अगेंस्ट all forms of exploitation. Clear? All forms of exploitation means what? No to imperialism, no to colonialism, no to colonialism, no to racism, no to racism. Okay. Now, what will happen after 1945? After 1945 हम क्या देखते हैं? After 1945, Britain, France, they become weaker. Italy, Germany, their power was completely destroyed. Japan, power was completely destroyed. Now there are two powers. Now the world was bipolar here. Now the world was bipolar. One pole was US and the other pole was Russia. The world was bipolar. And what is their opinion regarding colonization? They are not supporting it. Okay. So if these two superpowers are opposing, okay, imperialism and colonialism, so will it mount pressure on the powerful nations of Europe that they should start giving freedom to the colonies? Yes. Clear? If these two superpowers are opposing imperialism and colonialism, so this will definitely mount pressure. This will definitely mount pressure on powerful countries of Europe. On powerful countries of Europe. ये यूरोप के पावरफुल कंट्रीज पे एक प्रेशर बनाएगा that they should start giving freedom to the colonies. That they should start giving freedom to the colonies. And these colonies will be what? Newly independent nations. Now these colonies will be what? Newly independent nations. Clear? Newly independent nations. Now what will happen? Both these two superpowers will fight with each other. That's a kind of ideological conflict to bring these newly independent nations in their spheres of influence. वो उनको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करें. So read this point. Now both these two superpowers, read this, came in a state of ideological conflict with each other. Now both these two superpowers came in a state of ideological conflict with each other. Now both these two superpowers came in a state of ideological conflict with each other. Both these two superpowers came in a state of ideological conflict with each other. Came in a state of ideological conflict with each other to establish or to increase their sphere of influence on, to increase their sphere of influence on these newly independent nations. They will come in conflict with each other to increase their sphere of influence on these newly independent nations. एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? Now the third concept, right? Third concept, right? Independence of India
independence of India and role of international factors. Independence of India and role of international factors. क्या आप पहले वाले पॉइंट्स को यहाँ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड रोल ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर्स, यस कर सकते कि नहीं? कर सकते ना पॉइंट को? तो व्हेन यू रीड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ऑलवेज रिमेंबर that India became a free and independent nation on 15th August 1947. So yes, our national movement contributed, revolutionaries contributed, Gandhi contributed, Subhas contributed, the peasants contributed, the tribals contributed, different ideologies contributed. But apart from all this, what contributed in this process? International factors also. Okay? Now I am just giving some hints here. First World War, 1914 to 1918, two group of nations. On one side there is Germany, okay, Austria Hungary, right? And on other side there is Britain, France, Russia. We have already discussed that Italy will join this side, supported by US. Clear? But US enters in the First World War. US enters in First World War at a later stage. Clear? US बाद में आता है. And when US enters, okay, US will put a condition. US will put a condition before Britain. ये ब्रिटेन के सामने एक कंडीशन रखेगा. And what is the condition? That after the victory in First World War, Britain will give right to self-determination for the people who are living in these colonies. Write this. US will put a condition before Britain that after independence, right? US will put a condition, and the condition is that after independence, US will give right to self-determination, US will give right to self-determination for the people who are living in colonies. Okay, for the people who are living in colonies. Okay, and in this respect we see what? HRL movement, Home Rule League movement. In this, देखो यहाँ पे objective क्या है? Home rule. In the same respect we see the first mass movement of Gandhi, non-cooperation movement. First mass movement of Gandhi, non-cooperation movement में what was our political demand? Swaraj within 1 year. यही था ना पॉलिटिकल डिमांड? स्वराज विद इन 1 ईयर. स्वराज इसका मतलब क्या है? स्वराज, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. Okay, we accept British rule in India, but Indians will take all important decisions regarding India's administration. ठीक है, इंडिया को कौन चलाएगा? इंडियंस चलाएंगे. ठीक है, ये मेन डिमांड था. तो दिस डिमांड इज इन सिंक विथ यूएस डिमांड टू ब्रिटेन, और कहीं ना कहीं प्रेशर था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे. तो 1919 व्हाट वी सी, द एक्ट ऑफ 1919. ठीक है ना, ये चीजें हैं. इसके बाद देखो द सेकेंड पॉइंट, व्हेन यूएस एंटर्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगेन आई टोल्ड that it entered at a later stage, and when it enters, US says that US is entering World War II, okay, in the name of protection of humanity. US is entering into Second World War II in the name of protection of humanity, मानवता की रक्षा के लिए, in the name of protection of liberal democracies. लिबरल डेमोक्रेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर कर रहा है. व्हाट अबाउट अटलांटिक चार्टर? अभी मैंने आपको बताया अटलांटिक चार्टर 1941. ये सब इंडियन क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाले आते हैं. अटलांटिक चार्टर 1941 क्या कहता है? ब्रिटिश पीएम है, साथ में यूएस प्रेसिडेंट है, दोनों मिलके कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का विश्व कैसा होगा?
ऐसा विश्व होगा जहां पे लिबरल डेमोक्रेसीज को प्रमोट किया जाएगा, कॉलोनियलिज्म नहीं होगा, इंपीरियलिज्म नहीं होगा। तो बताओ कि 1941 के बाद क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर होगा कि इंडियंस के साथ जो भी नेगोशिएशंस चल रही हैं, जैसे 1939 लिथुआ ऑफर, 1940 ओके अगस्त ऑफ 1942 क्रिप्स मिशन प्लान दैट फेल्ड, बट इन 1946 में क्या आता है इंडिया में, कैबिनेट मिशन प्लान। ये कब आता है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड कैबिनेट मिशन प्लान के जो प्रोविजंस थे, द प्रोविजंस वेर more serious in nature. Our constituent assembly was also set up according to this cabinet mission plan. हमारी constituent assembly भी इसी cabinet mission plan के तहत ही बनी हुई थी। मेरी बात समझ गया ना? तो cabinet mission plan was having more serious proposals, okay, in order to solve the deadlock between INC and the British government. Deadlock के लिए negotiations हो रहा था। लिलित को ऑफर में हमारे साथ मजाक हुआ, अगस्त ऑफर में हमारे साथ मजाक हुआ, क्रिप्स मिशन प्लान में हमारे साथ मजाक हुआ, बट हाँ इसके बाद वेवल्स प्लान में भी हमारे साथ मजाक हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस। तब आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड हियर वी सी मोर सीरियस टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, और 1946 के बाद क्या होता है, ब्रिटिश अनाउंसमेंट। ठीक है, 1948 तक हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे, और तय किया था कि कहाँ 30 जून 1948 को जाना है, और भाग गए इंडिया छोड़ के कब, 15 अगस्त 1947 में। टाइम से पहले चले। इसके पहले हम कह रहे थे जाओ भैया, भेजने के लिए हमने क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाया, भारत छोड़ो, उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और जब इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई तो तय किया था कि 30 जून 1948 को हिंदुस्तान छोड़ेंगे। छोड़ कब दिया, 15 अगस्त 1947 को। इट्स ऑल ड्यू टू इंटरनेशनल circumstances. Got it? So international circumstances and factors played a very important role also in the Indian independence movement, and we can say that in the process of decolonization also. Okay, तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आप लिखो, राइट दिस पॉइंट, दिस एक क्वेश्चन लिख लो सो दैट यू कुड हैव दिस कॉन्टेक्स्ट इन योर माइंड, राइट क्वेश्चन, राइट दिस ओके। Do you consider that, do you consider that international factors also played an important role, do you consider that international factors also played an important role, international factors also played an important role, okay, in the independence of India, in the independence of India, international factors also played an important role in the independence of India, okay, discuss, discuss। एक बार खुद से आंसर लिखना है, समझ गया ना मेरी बात को, राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स। जब आप खुद से लिखोगे यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट इट अगेन इन योर आंसर सेट इन द मेंस एग्जाम। ठीक है ना, वो किताब लेके टहलने से सिर्फ माहौल बनता है, ठीक है, आंसर वांसर नहीं लिख पाते आदमी। तो पहले क्या करना है, इन योर वर्ड सिंपल सेंटेंसेस, फ्रेम सिंपल सेंटेंसेस in point wise format, write at least 4 to 5 points in your answer, that will be helpful to you, right? In next class I will discuss with you third worldism। third worldism क्या होता है, third world nations क्या होती है, what is first world, what is second world, what is third world, I will discuss with you, okay, third worldism and idea of NAM, and I will discuss with you United Nations, right? These two concepts I will discuss with you, and that will be the last topic in our segment, okay, वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर जीएस, वो लास्ट टॉपिक होगा। नहीं मतलब कल खत्म नहीं होगा, बट इट आई थिंक दैट दिस विल गो ऑन कंटिन्यू टिल फ्राइडे तक तो जाएगा ही, ठीक है ना। और इसके बाद सम स्पेशल टॉपिक्स लिंकिंग वर्ल्ड हिस्ट्री स्टैटिक पोर्शन विद द करेंट डेवलपमेंट्स, ठीक है ना। आई विल टेक स्पेशल सेशंस फॉर दैट, ठीक है ना। ये खत्म कर दूंगा, वी विल फिनिश इट, ओके, देन वी विल कंटिन्यू मॉडर्न इंडिया, जो हम कर रहे हैं मॉर्निंग में वो चलता रहेगा, ठीक है ना। और इवनिंग में बीच बीच में हम क्या करेंगे कि स्टैटिक थीम प्लस करेंट थीम दोनों को जोड़ के टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, गॉट इट, ओके। एंड दैट आई विल पुट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, पोस्ट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, एंड यू कैन ज्वाइन इट लाइव ऑल्सो, ठीक है। तो वो टॉपिक भी हम करेंगे, राइट। समझ में आया क्लास, क्लियर, ओके।
सो दीज आर बेसिक आइडियाज दैट वी मस्ट नो। ठीक है, यहाँ मैं बहुत डिटेल में अभी एंटर नहीं किया हूँ, ठीक है, बिकॉज इन कोल्ड वॉर देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में देयर आर डिफरेंट इवेंट्स की कोरिया वॉर क्या है, अफगान वॉर क्या है, बर्लिन क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, इन डिटेल। ठीक है, राइट, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, कोरियन वॉर क्या है, ओके, सो दैट आई विल डिस्कस इन ऑप्शनल लेक्चर्स, ठीक है ना, नॉट इन जीएस। ठीक है, वो उतना ज्यादा एक्सटेंशन जरूरी नहीं। हैव एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू, है कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, वेलकम।